क्लास स्टार्ट हो रही है बीएससी पार्ट 1। आज अभी हम लोग अर्थ्रोपोडा फाइलम के बारे में पढ़ेंगे। बीएससी पार्ट 1 जूलॉजी Arthropoda we will see now. Okay, so first of all, definition of Arthropoda. What are these animals basically belong to? What are the characteristic feature, unique feature on the basis of which this group is separated from other groups? So arthropods are bilaterally symmetrical. Okay, arthropods are bilaterally symmetrical. Bilaterally symmetrical तो प्लेटीहेलमिन्थेस जो पढ़ा है वो भी है। ओके, तो और क्या फीचर इसको आर्थ्रोपोड्स को अदर एनिमल से अलग करते हैं? इट इज बायलैटरली सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक प्लेटीहेलमिन्थेस भी था, यह भी है। आगे चलते हैं। आर्थ्रोपोड मेटामेरिकली सेगमेंटेड एनिमल्स भी हैं। यहां से वो डिफरेंट हो गया, उससे वो सेगमेंटेड नहीं था, but these are segmented animals metamerically, and they are with the coelom. Okay, and this coelom is reduced. प्लेटीहेलमिन्थेस में सीलोम नहीं था, एसिलोमेट था। हाँ, मीजोडर्म है लेकिन सीलोम नहीं है। और यहाँ पर ट्रिप्लोब्लास्टिक है, यानी एंडोडर्म, एक्टोडर्म, मीजोडर्म है, बट सीलोम ओके भी है। बट हियर द सीलोम इज reduced in arthropods and modified. Another characteristic feature of arthropoda, ये सब definition में ही आप लिख सकते हैं कि their body is covered external, and this exoskeleton, chitinous exoskeleton, molds periodically. यानी exoskeleton shred होता है, shed होता है, shred नहीं, shed होता है और नया उसको प्लेस कर देता है। So chitinous exoskeleton molds periodically. और वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अपेंडेजेस आर ज्वाइंट। ओके, अपेंडेजेस आर ज्वाइंट। मेरी आवाज आ रही है स्टूडेंट्स? ओके, अब देखिए कि आर्थ्रोपोड का डेफिनेशन हो गया। अब आर्थ्रोपोड का क्लासिफिकेशन, उसके बाद जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ाएंगे, क्योंकि बहुत सारे वर्कर्स, साइंटिस्ट, जूलॉजिस्ट ने आर्थ्रोपोड का क्लासिफिकेशन भिन्न भिन्न तरीकों से किया है। फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, अभी जो क्लासिफिकेशन बता रहे हैं आपको वह ज्यादा आसान रहेगा आपके लिए, ठीक है? क्योंकि बहुत सारे जूलॉजिस्ट ने इनको अलग अलग तरीके से क्लासिफाई किया है आर्थ्रोपोडा को। यह क्लासिफिकेशन आपको जो भी हम बता रहे हैं, these are given by workers, different workers like Wenda 1942, 1949, okay. Snodgrass, स्टोर, इन लोगों ने यह क्लासिफिकेशन दिया है। आप एग्जाम में ये लिखोगे कि ये जो भी क्लासिफिकेशन आपको हम बताएंगे, ठीक? तो सबसे पहले जान लीजिए, आर्थ्रोपोड is divided into 3 subphylums by these workers, these scientists. Number 1,
Trilobitomorpha. Okay. Number subphylum 2, Cheliceratta. Subphylum number 3, Mandibulata. Number 1, Trilobitomorpha, Cheliceratta and Mandibulata. ट्राइलोबिटोमोर्फा सब फाइलम एक्सटिंक्ट हो गया, इसको हम पिछला क्लास में आर्थिमोर्फा भी बताए थे। आप लिखो ट्राइलोबिटोमोर्फा। ट्राइलोबिटोमोर्फा इज एक्सटिंक्ट. Trilobites belong to this subphylum, so you need not study this phylum, this subphylum. हम लोग जनरल कैरेक्टरिस्टिक ट्राइलोबिटोमोर्फा के बाद जो सब फाइलम नंबर 2 है चेलिसिराटा और सब फाइलम नंबर 3 मैंडिबुलेटा, ठीक, यह हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये तो सब फाइलम हो गए। These subphylums are further divided into the classes. तो सब फाइलम 1 ट्राइलोबिटोमोर्फा वो तो एक्सटिंक्ट हो गया, उसके कोई क्लास नहीं है। सब फाइलम नंबर 2 चेलिसिराटा। चेलिसिराटा के 3 क्लास हैं। नंबर 1 मीरोस्टोमाटा, नंबर 2 अरैक्निडा, नंबर 3 पिक्नोगोनिडा। ये हो गए चेलिसिराटा के 3 क्लास। नंबर 3 सब फाइलम मैंडिबुलेटा, इसमें 6 क्लास है, 6। नंबर 1 क्रस्टेशिया, नंबर 2 चिलोपोडा, 3 सिम्फाइला, 4 पॉरीपोडा, 5 डिप्लोपोडा, 6 इंसेक्टा। ओके, तो ये 6 क्लास का हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। अब आते हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। आप लोग नोट बना सकते हो, इस वीडियो को देख करके आप लोग पॉइंट्स लिख लेना। फाइलम आर्थ्रोपोडा का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, अभी बताया डेफिनेशन में वो कैरेक्टरिस्टिक्स। नंबर 1, दे आर बायलैटरली सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक, मेटामेरिकली सेगमेंटेड एनिमल्स, दैट्स ऑल। नंबर 1। 2, body organization is of an organ system level. 3, body is covered with a thick chitinous cuticle, and this is forming the exoskeleton of this animal. Their body segments bear lateral and jointed appendages, and these jointed appendages have varied functions, such as they are forming jaws, gills, legs, etc. Their body is divided into head, thorax, and abdomen. Okay. Sometimes head and thorax often fuse to form cephalothorax. Their musculature, next point, their musculature is not continuous, but it comprises separate stripped muscles and capable of contraction, rapid contraction. Their body cavity is hemocoel. Next point. Body cavity is called hemocoel. And the true coelom is reduced to the spaces of genital and excretory organs. Digestive system is complete. Next point में, with mouth and anus. Their mouth parts are adapted for various modes of feeding. Next point. This animal has open circulatory system with dorsal heart and arteries, but without capillaries. Okay,
इनमें कैपिलरीज नहीं है। रेस्पिरेशन is done by general body surface और गिल के के थ्रू भी। aquatic arthropods respiration is done by gills and general body surface. Even trachea is involved in respiration. But terrestrial arthropods, they have book lungs. Lung in the form of book. बुक्स पे कितने सारे पेज होते हैं, बहुत सारे पेजेस। उन पेजों को इकट्ठा करके हर पेज जो है वो गैसियस एक्सचेंज का एक सरफेस है। Okay, they do not have true nephridia. Next point, no true nephridia. Excretion organ are green glands or Malpighian tubules or coxal glands. Green gland, Malpighian tubule or coxal glands. Next point, the nervous system is typically annelidan type. Annelida हम लोग next class में पढ़ेंगे। The nervous system is typically annelidan type with a dorsal brain connected with a nerve ring to a double ventral nerve cord. Okay, somebody बाद में आइएगा, अभी क्लास ले रहे हैं। Nervous system is typically annelidan with a dorsal brain connected with a nerve ring. And that nerve ring is again connected to double ventral nerve cord. In them, next point, cilia are entirely absent from all parts of the body. You don't have cilia. Next point, sensory organs include eyes. They may have simple and compound eyes. Chemo and tactile receptors are also sensory organs. They have balancing and auditory organs. So these are the sensory organs. Now you are seeing that the sensory organs are there. अभी तक हम लोग organ नहीं देखे थे, sensory organs. Sexes are usually separate, dioecious. These animals are dioecious. जब हम dioecious बोलते हैं मतलब male and female अलग अलग individual में, अलग अलग male reproductive system एक अलग individual में है, female reproductive system अलग individual में, dioecious. hermaphrodite में और monoecious में male and female reproductive system are present in the same animal. Okay, reproduction organs, reproductory organs and reproductive ducts are paired. Fertilization, next point, fertilization is internal. Okay, they are either oviparous or ovoviparous. Okay. Their development is usually indirect through larval stages. In some arthropods, you will find parthenogenesis. In these animals, parental care is also found. Next point. In many arthropods, this phylum is the most diversified group because they inhabit all three modes of the habitat, that is land, water and air. Arthropods have conquered land, water and air habitat, and they dwell well. Okay. So now I have explained you the general characteristics of phylum Arthropoda. ठीक, ओनिकोफोरा पहले
फाइलम आर्थ्रोपोडा में ही इंक्लूड किया जाता था, लेकिन रिसेंट स्टडी, फिर एडवांस स्टडी ओनिकोफोरा को सेपरेट फाइलम बना दिए। हमने सेपरेट फाइलम में ओनिकोफोरा आपको एक्सप्लेन बताया है, जो लिस्ट बताया था उसमें ओनिकोफोरा सेपरेट फाइलम था। अब देखिए नेक्स्ट, अब चलते हैं हम लोग इस फाइलम को अलग अलग ग्रुप के, इस फाइलम के, आर्थ्रोपोडा फाइलम के अलग अलग ग्रुप के कैरेक्टरिस्टिक्स को जानने के लिए। पहला सब फाइलम क्या था? ट्राइलोबिटोमोर्फा। तो ट्राइलोबिटोमोर्फा is represented only by the fossil trilobites, and we have well preserved fossil records of this subphylum. All of the animals are marine, all are bottom dwellers यानी bentozoic, and they existed from Cambrian to Permian era. ठीक है, इतना ही जान लो, सारे के सारे एक्सटिंक्ट हो गए। एग्जाम्पल ट्राइलोबाइट्स, कॉमन नेम है ट्राइलोबाइट्स में, और भी कई तरह के, कोई एक स्पीसीज नहीं है ट्राइलोबाइट, बहुत तरह के ट्राइलोबाइट्स हैं। दूसरे सब फाइलम पर आते हैं, कोई क्लास नहीं बना है इसमें, दूसरा सब फाइलम में क्लास है। देखिए दूसरा सब फाइलम क्या था? चेलिसिराटा। इसका मतलब होता है ग्रीक में चेली मीन्स क्लॉव, किरोस मीन्स हॉर्न, आटा मीन्स ग्रुप। क्लॉव हॉर्न ग्रुप। General characteristics are of this subphylum is body can be divided into anterior cephalothorax, इसको हम प्रोसोमा भी बोलते हैं सिफेलोथोरैक्स को, एंड पोस्टीरियर एब्डोमेन और ओपिस्थोमा, ओपिस्थोसोमा। So prosomatic appendages are 6 in pairs. Okay. So out of these 6 pairs, the first pair is pre-oral, and that is with claws, and that is being used in feeding. The function is feeding of this first pair of appendage. Second pair of appendages are post-oral. Okay, इसका नाम है पेडिपाल्पी, और उसके बाद फिर 4 पेयर और हैं, 6 पेयर टोटल। फर्स्ट पेयर इज प्री ओरल, सेकेंड पेयर इज पोस्ट ओरल, उसके बाद फॉलोड बाय 4 पेयर्स ऑफ वॉकिंग लेग्स दे हैव। नेक्स्ट पॉइंट, दे डोंट हैव एंटीना एंड ट्रू जाव्स। नो एंटीना, नो ट्रू जाव्स। किसमें? चेलिसिराटा का सब फाइलम में, जो भी एनिमल्स हैं। and they are mostly terrestrial and predaceous, शिकार करके अपना खाना भोजन करते हैं, टेरेस्ट्रियल है। इसमें आपके 3 क्लास थे और कई सारे ऑर्डर हैं इन क्लासेस में, ठीक है। उन ऑर्डर्स में हम लोग नहीं जाएंगे, हम सिर्फ क्लास के कैरेक्टरिस्टिक्स को कवर करेंगे। तो नंबर 1 क्लास मीरोस्टोमाटा। ग्रीक में मीरोस मतलब थाई होता है और स्टोमा मीन्स माउथ। ओके, सो मीरोस्टोमाटा के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। नंबर 1, these are exclusively aquatic, all marine, and they have median simple and lateral compound eyes. Next point, they have 5 to 6 pairs of abdominal appendages, and these appendages are modified as gills or branchiae for respiration.
Their abdomen is ending in a sharp telson or spine, and their excretion is, next point, done by coxal glands. They don't have Malpighian tubules. These are the characteristics of class Merostomata. Examples are Limulus, यानी किंग क्रैब कॉमन नेम है, यूरिप्टेरस, ओके, बुथुस, चेलिफर, ठीक, ये सब आप, these are the examples. वोल्फ स्पाइडर, हाउस स्पाइडर, ये सब चेलिसिराटा से बिलोंग करते हैं. ये भी एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं. क्लास नंबर 2, अरैक्निडा. स्पाइडर, सॉरी, आई डिड ए मिस्टेक. अभी जो हॉर्स स्पाइडर बोले हैं वो इसका नहीं, वो अरैक्निडा है. क्लास 2 अरैक्निडा. ग्रीक में अरैके मीन्स स्पाइडर होता है, वाइड मीन्स लाइक होता है, स्पाइडर लाइक. तो स्पाइडर्स हैं इसमें. The characteristics are, these are terrestrial or aquatic. They have simple eyes. They don't have compound eyes. They bear 6 pairs of appendages, 4 pairs of walking legs, 1 pair of chelicerae, and 1 pair of pedipalpi. Yani 1 pair pre-oral, 1 pair post-oral appendages, and 4 pairs of the abdominal appendages, and these 4 pairs are walking legs. Okay. There are no, okay, these are the 4 pairs are thoracic appendages. The trachea, book lungs, or book gills serve as respiratory organ. They have trachea, book lungs, and book gills. All these 3 organs serve for respiration. Excretion is, next point, is done by coxal glands and Malpighian tubules. इसके पहले वाले क्लास में Malpighian tubules नहीं था, coxal gland था. इसमें coxal gland and Malpighian tubules दोनों. Here sexes are separate, means dioecious. Mostly they are oviparous, and they do courtship before mating. Their development is direct. Next point. ठीक, इसके एग्जाम्पल्स हैं चेरिनस और राइटिंग स्पाइडर, हाउस स्पाइडर, वोल्फ स्पाइडर. ये 3 नाम आराम से याद हो सकते हैं आपको. राइटिंग, होर्स, वोल्फ स्पाइडर. काफी बड़ा क्लास था है ये इस सब किंगडम का. तीसरा क्लास है पिक्नोगोनिडा. These are commonly referred as sea spiders. They are very small in size. Next point, the body mainly consists of cephalothorax, but abdomen is greatly reduced. Their
Preoral appendages are short and they have 8 pairs of long walking legs. Mouth is placed on the long proboscis and they have simple eyes, 4 in number, 4 की संख्या में. They do not have respiratory or excretory organs. Next point. Sexes are separate, dioecious. Females in them have a pair of ovigeres which carry the eggs. Example is pycnogonum and nymphom, class 3. Pycnogonida. चलिए सिराटा हो गया आपका सब फाइलम नंबर 2. अब आते हैं सब फाइलम नंबर 3, दैट इज मैंडीबुलेटा. एक काफी बड़ा सब फाइलम है, काफी डाइवर्स सब फाइलम है. मैंडिबुल मीन्स मैंडिबुला मीन्स मैंडिबल, आटा मीन्स ग्रुप. ओके, इस सब फाइलम के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, दीज आर टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक, एक्वेटिक में भी दोनों, फ्रेश वाटर एंड मरीन. Their body is divisible into either cephalothorax and abdomen or head, thorax, abdomen. या तो आप कह लीजिए cephalothorax and abdomen में इनका बॉडी कैन बी डिवाइडेड, और cephalothorax में भी हेड, cephalohead और thorax. एब्डोमेन या हेड, किसी में हेड, thorax एंड एब्डोमेन तीनों है, अलग क्लास है. In them, next point, head appendages consist of 1 or 2 pairs of antennae, 1 pair of mandibles, and 1 or 2 pairs of maxillae. They bear, next point, compound eyes. Next point, respiration in them is carried by either gills or trachea. Their excretory system is represented by Malpighian tubules or green glands. Sexes are separate with dimorphism, sexual dimorphism. And the development involves larval stages, means development is indirect. ये हो गया आपका मैंडीबुलेटा के कैरेक्टरिस्टिक्स. अब इस मैंडीबुलेटा में कई सारे क्लासेज हैं, 6 क्लास है. क्लास नंबर 1 क्रस्टेशिया. लैटिन में क्रस्टा मीन्स होता है हार्ड सेल. कैरेक्टरिस्टिक्स आर mostly these animals are aquatic, generally marine. क्रस्टेशिया ये होते हैं मरीन, बट कुछ फ्रेश वाटर भी है और कुछ मॉइस्ट प्लेसेस पर भी पाए जाते हैं कुछ क्रस्टेशियंस. ठीक है, जनरली दे आर मरीन बट फ्यू आर फ्रेश वाटर एंड फ्यू लिव इन मोस्ट मॉइस्ट प्लेसेस. जनरली क्रस्टेशिया इज फ्री लिविंग. फ्री लिविंग एंड पैरासिटिक, दो अलग अलग तरह का ग्रुप हो गया. फ्री लिविंग अपने इंडिपेंडेंट है, पैरासिटिक डिपेंडेंट है, वो फ्री लिविंग नहीं है. ओके, तो जनरली दीज एनिमल्स आर फ्री लिविंग बट सम आर पैरासिटिक टू. Head in them are often joined with thorax to form cephalothorax. And that cephalothorax is covered dorsally by carapace. Chitinous hard limy exoskeleton is present in them. Next point. Exoskeleton is chitinous, hard and limy.
Head is segmented into five in number, 5 सेगमेंट होते हैं हेड में, और जिसमें हेड में 2 पेयर्स ऑफ एंटीना है, 1 पेयर ऑफ मैंडिबल्स है एंड 2 पेयर्स ऑफ मैक्सिली. And the appendages are biramous, means appendage will divide into two. Respiration is done by gills or general body surface. Coelom is reduced and is in the form of hemocoel. Their blood vascular system comprises a dorsal contractile heart communicating by valvular ostia and an enclosing pericardial sinus. Excretion in them is done by either maxillary glands or antennary या green glands. ठीक. Sexual dimorphism is common. Sexes are separate. These are the characteristics, and development is indirect. These are the general characteristics of crustacea. Examples are Artemia, Apus, Daphnia, ये हम biological name बोल रहे हैं. These are not the common names. Darwinula, Polycope, ओके. अब आते हैं नेक्स्ट क्लास में. क्यों भाई, 3 ही स्टूडेंट्स प्रेजेंट है. स्टूडेंट्स, मेरी आवाज आ रही है? सब अटेंडेंस लगा के चला गया. ओनली 3 आर. हमको पता चलता है कौन क्लास कर रहा है. क्लास नंबर 2, चिलीपोडा. चिलियोस मीन्स लिप होता है, पोडा मीन्स फूट होता है. ओके. General characteristics of Chilepoda are, because this group includes centipedes or 100-leggers, 100 leg. Their body is dorso-ventrally flattened and can be divided into head and 15 to 173 trunk segments. Next point, head bears a pair of antennae, a pair of mandibles, and a pair of maxillae. Legs, 1 in number, 1 pair in number on each trunk segment. तो 100 से ज्यादा ट्रंक सेगमेंट्स हैं और हर सेगमेंट में एक पेयर ऑफ लेग है. That's why these animals are called as 100-leggers. और इसमें फर्स्ट पेयर ऑफ लेग्स जो है, it forms poison claws. These are carnivorous and actively predates other, it's for food. Examples are Chilopoda का Lithobius, Geophilus, Scolopendra. Class number 3, Symphyla. ठीक. Yes, Scolopendra. Class number 3, Symphyla.
These are garden centipedes. Next point. These are terrestrial but found in damp places with humans. Their body is slender and can be divided into head and 15 to 22 with 10 to 12 pairs of legs. These animals are blind, they don't have eyes. In them, head bears one pair of antennae, one pair of mandibles, and two pairs of maxillae. Spiracles, which are involved in respiration, is present in head only. Next point. Genital apertures are situated mid-ventrally between fourth pairs of legs. Examples are Scolopendra, Pendrella. अभी किसी ने बताया Scolopendrella. Class 4. Pauropoda. Pauros means small, poda means foot, small foot. Characteristics are these animals are minute, but their body is divisible into head and 11 to 12 trunk segments with 9 to 10 pairs of legs. Their body is soft. These are soft bodied arthropods and they are found in dark, damp places, usually under stones, logs, fallen leaves, and in soil. Head bears a pair of antennae, a pair of mandibles, and two pairs of maxillae. And these two pairs of maxillae forms the lower lip. Animal, next point. This animal is blind. They don't have no eye. They don't have eyes. Scolopendra नहीं, Scolopendrella. राजानंद, Scolopendrella. ठीक है, Scolopendra नहीं, Scolopendrella होगा. ठीक है, करेक्ट कर लेना आप. So these soft-bodied arthropods found in dark, damp places. Their head bears a pair of antennae, a pair of mandibles, and two pairs of maxillae forming their lower lip. They don't have eyes. Gonopores lie mid-ventrally on third segment. Examples: Pauropus, Decaporopus. Pauropus and Decaporopus. दो एग्जाम्पल याद रख सकते हैं आप लोग. Class 5. Diplopoda. Diplos means double. Poda means foot. ठीक है. This group of animal includes millipedes or thousand-leggers. The body is elongated, cylindrical, subcylindrical, or subcylindrical, and they are capable of being rolled up. The body को ये रोल कर सकता है. ठीक है. Body is divisible into head, thorax, and abdomen. Head is 5 segmented, thorax is 4 segmented, and abdomen is 20 to 100 segmented. Head possesses one pair of antennae, one pair of mandibles, and one pair of maxillae. Thoracic segments bear one pair of legs, each thoracic segment. Okay? लेकिन एब्डोमेन में लेग्स जो हैं वो 2 पेयर्स में,
इसीलिए इसका नाम डिप्लोपोडा है. Okay, legs are two pairs in number on each abdominal segment. That's why diplopoda. No poison claws. These are herbivorous. And gonopores, next point, gonopores are mid-ventrally situated on third abdominal segment. So this is about diplopoda. Class 6, insecta. Insectum means लैटिन वर्ड से लिया गया है, being cut into इसका मतलब होता है. So insecta terrestrial है. So they are air breathing. Mostly they are terrestrial and rarely aquatic. Body is made up of head. In head, 6 fused segments are there. 6 segment fuse करके head का formation किए हैं. Thorax 3 segments and abdomen up to 11 segments. ठीक. Head bears a compound eye, a pair of antenna, and mouth parts are adapted for chewing, biting, piercing, sucking, siphoning, or sponging. Yes, Selja has written Diplopoda herbivorous, air breathing. Yes. So their head bears a compound eye, a pair of antenna, okay, and other mouth parts are adapted for chewing, biting, piercing, sucking, siphoning. Thorax are present with 3 pairs of jointed legs and 1 or 2 pairs of wings, which may be absent or present. हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. The abdomen is devoid of appendages. Next point. They don't have liver, but salivary glands are usually present. Body is elongated, tubular heart, and it is divided into 8 chambers. Heart is divided into 8 chambers and it is situated in abdomen. Respiration in is carried by branched trachea and excretion is carried by Malpighian tubules. These are unisexual, यानी dioecious हैं. Fertilization is internal. Development is sometimes direct. Okay, but mostly the development is indirect. मेटामॉर्फोसिस इनमें होता है, कॉम्प्लिकेटेड. बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं इंसेक्टा के, आप लिख सकते हैं. कॉमन जो भी आपके आसपास है, फ्लाइज, मॉस्किटोज, कॉकरोच, यस, ये सब ये आप लिखो. इसमें बताने की आवश्यकता नहीं. सो दीज आर द, और उसमें कई सारे ऑर्डर्स हैं इंसेक्टा में. लाइस भी कई तरह के हैं, बुक लाइस, बार्क लाइस, डस्ट लाइस, बर्ड लाइस, ये भी लिख सकते हो आप इसके एग्जांपल्स में. ओके स्टूडेंट्स, तो आई थिंक आर्थ्रोपोडा का जनरल कैरेक्टरिस्टिक, क्लासिफिकेशन, डेफिनेशन एंड इनके क्लासेस के डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, these all are covered. Okay, see you in the next class tomorrow.
तो अब कल के क्लास में मोस्टली यही होगा कि आई हैव टू टेक द अटेंडेंस। आप सभी लोगों का इंट्रोडक्शन लूँगा और अटेंडेंस रजिस्टर में नाम चढ़ाया जाएगा। और अभी तक जितने क्लासेस हुए हैं कल से लेकर आज तक जितने सेशंस हुए हैं, इन सभी सेशंस के का अटेंडेंस जो आप लोगों ने लाइव कमेंट्स में मार्क किया, सिर्फ ऑड आवर वाला जो सुबह 4 बजे लिए थे उसको छोड़ के, उसमें बाद वाले कमेंट्स को भी इंक्लूड कर लेना। इसलिए जिसका क्लास छूट गया है, अगर ज़्यादा तेज है, जाके कमेंट कर दे, ये ट्रिक है। तो कल जब अटेंडेंस लेंगे तो वो काउंट हो जाएगा, अटेंडेंस के बाद जो कमेंट आएगा वो काउंट नहीं होगा। ओके, फोन आ रहा है। ठीक है, तो ऑर्थोपोडा फिनिश हो ही गया है और हम लोग और ज़्यादा आर्थ्रोपोडा के बारे में पढ़ेंगे, एनाटॉमी और इसके अदर फीचर्स। ठीक है, इन सेक्शन 3 ऑफ दिस पेपर। ठीक, तब तक के लिए गुड बाय।